नमस्ते, मैं आदित्य श्री, होलिस्टिक काउंसलर। और आप ये पीछे वातावरण देख रहे होंगे, ये चिड़ियों की चहचहाहट, ये इतना सुंदर दृश्य। और मैं आज आया हूँ फिर दोबारा उसी सत्र में चर्चा साध्वी जी के साथ। और साध्वी भगवती सरस्वती जी परमार्थ आश्रम में, गंगा तट, ऋषिकेश में। ये इतना मनोरम दृश्य है कि शायद कोई आकर वापस जाता हो यहाँ से। शारीरिक तो चले जाता होगा पर मानसिक वो यहीं रहता है, कोई व्यक्ति वापस नहीं जाता यहाँ से। और आप ये देख रहे हैं चिड़ियाँ बीच बीच में आ रही हैं, इतना सुंदर दृश्य है। आज मैं ही जानता हूँ भारत संतों, महात्माओं, साध्वियों, इनकी धरती रही है। शुरू से अलग अलग संतों ने इस देश का उद्धार किया है जन्म लेकर। लोग उनके दर्शनों के लिए आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनका जीवन जानना चाहते हैं। और तो मैं आज साध्वी जी से पहला प्रश्न ही मेरा ये रहेगा कि साध्वी जी बताएं कि आपका डेली रूटीन क्या रहता है। व्हाट्स योर डेली रूटीन? देखिए, मेरी पर्सनल रूटीन है, सुबह सुबह उठ जाते हैं और फिर उठने के बाद साधना करते हैं। मेरे लिए मेरे सुबह वाले साधना है कि मैं प्राणायाम करती हूँ, फिर मैं जप करती हूँ, फिर मैं ध्यान करती हूँ। तो उसी क्रम में ये साधना। गर्मी के मौसम में उसी समय भी योगासन करती हूँ, नहीं तो बाकी समय योगासन बाद में कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडी के मौसम में सुबह सुबह शरीर इतना बढ़िया से इतनी फ्रीली मूव नहीं होता। फिर मैं ऑफिस में आती हूँ, सारे साधना के बाद ऑफिस में आते हैं सेवा के लिए, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पूज्य स्वामी जी की दृष्टि, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी जो परमार्थ निकेतन के प्रेसिडेंट, स्पिरिचुअल हेड, मेरे गुरु जी, उनकी टीचिंग से, उनकी पर्सनल लाइफ से, उनकी दृष्टि से सेवा इज साधना। क्योंकि when we do सेवा, ये तो कर्म योग है। जैसे भगवान कृष्ण कर्म योग के बारे में बात करते हैं गीता में, तो every action, how can every action be yoga? So we are taught कि आपका ध्यान, आपका योग केवल आपकी कुशन के ऊपर नहीं है या आपकी मैट के ऊपर नहीं है। Yes, we must do the seated practice, क्योंकि उसी से अनुभव होती है, उसी से we realize that we are one with the divine, one with the creator, one with the creation. उसी से मन शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। But that's the beginning, not the end. That's the foundation. फिर जब हम ध्यान से उठ जाते हैं, योग से उठ जाते हैं, then we move through the world carrying that meditation, that yoga into the world, जिससे हम मिलते हैं। How do we see that divine in them? So फिर मेरी कुशन के ऊपर साधना के बाद मैं ऑफिस में आती हूँ। हमारे इतने सारे सेवा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जी। बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, गरीब लोगों के लिए जो स्लम्स में रहते हैं उन्हीं के लिए, बीमार लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, क्लाइमेट चेंज, इतने सारा सेवा मौका मिलते हैं। तो ऑफिस में आते हैं, फिर सारे दिन में सेवा में रहते हैं, चाहे अपने प्रोजेक्ट्स, चाहे मेरी राइटिंग का बुक्स हो, आर्टिकल्स हो, जैसे मेरी हॉलीवुड टू द हिमालयास मेरी बुक जो बस अभी भी भारत में लॉन्च हो रहा है बाय जाइको पब्लिशिंग, that came out last summer in America. It was by God's grace, by Pujya Swamiji's blessings and grace, a number one bestseller. Beautiful. Now it's
In India, care of Jaiko, a It's special. going to be another bestseller in India too. तो गुरु की कृपा, गंगा की कृपा, भगवान की कृपा से. So writing takes time. Writing takes attention. Writing takes focus. तो वो भी सेवा है. True. Books हो, also I write articles. या अपनी जो lectures है, जो speaking है, इसी type की interview है, तो सारे दिन अलग अलग तरह की सेवा में लग जाते हैं. ठीक बात. फिर शाम को गंगा जी की आरती, फिर आरती के बाद सत्संग. Satsang में I have the beautiful blessing and opportunity to serve as a vehicle through which answers flow. लोग प्रश्न पूछते हैं और मैं अपने को जहाँ तक हो सकते हैं, जितना हो सकते हैं, अपने को खाली कर लेती हूँ. I empty myself. That's my prayer. Just, oh God, let me be empty so that your divine grace can flow through me. And in that beautiful grace, I have this beautiful opportunity to be in seva of satsang, in which people ask questions and I have this, the truth, the answers, the inspiration flows through me for them. So then we have satsang. Third, after satsang, usually meeting with different people, counseling them. Third, sham ka sadhana. Third, so jate. अब आप बताइए कि इसमें आराम की बात कहाँ थी, क्योंकि नेचुरल है, ह्यूमन बॉडी है, तो बीच में कहीं ना कहीं आराम चाहिए होता है. Definitely. देखिए, जो आराम मेरे को मिलता है, मेरे को प्राप्त होती है सेवा में, that is the most beautiful आराम. That's the great blessing of aram, is the aram in seva, the aram in being a channel, a vessel for the divine. When God flows through you, वो तो परम आराम है. वाह. I mean, if you're stuck in thinking it's your ego, it's about me, it's all about me, what for me, where do I stand? Well, then you get stuck. Then you are stressed. Then you're tensed. वो आराम, वो विश्राम जो सेवा में मिलता है is the most beautiful. Now, of course, I take care of my body. शरीर एक मंदिर. ठीक बात. So definitely I am not one who would say कि oh, I don't sleep, मैं कोई ध्यान नहीं देती हूँ. I am very, very good at taking care of the physical body because I know I need this body for my dharma. इसी शरीर की माध्यम से I will be able to fulfill my dharma. Bina sharir, we cannot fulfill our dharma. True. Bina sharir, we cannot work through our karmic package and journey. फिर एक और लेना पड़ेगा. शरीर से ही अपने dharma, अपने karma, it all happens. Also, I love this body. I love being able to use this body as a way of interacting with the divine creation. Whether it's watching Ganga, listening to the birds, doing the arti, listening to Pujya Swamiji sing, seeing the smile on a child's face, holding that child in my arms. These are all things ki bina swast sharir nahi ho sakte, because then you cannot go sit on the banks of Ganga. You cannot do the seva, because then you are all just stuck in pain and bimar and ye. So sharir ek mandir hai. Need bahut zaruri hai.
ठीक से खाना बहुत जरूरी है, सात्विक खाना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ अपनी मन जो है, आप वेलनेस के बारे में बात करते हैं, you know the power of stress on our physical bodies. True, true. Wherever there is stress, the body falls apart. जितना नींद लेंगे, जितना बढ़िया खाना खाएंगे, जितनी vitamins लेंगे, अगर मन में stress तो फिर आज नहीं, कल नहीं, परसों, that body will fall sick. ये ठीक वैसा है जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मुझे खाली वीकेंड्स पसंद है, काम करना नहीं। पर जिस व्यक्ति को अपने काम से ही प्यार होता है, उसके लिए रोज़ वीकेंड है, रोज़ छुट्टियां हैं और रोज़ ही आराम है। तो साध्वी जी ने अपना वो आराम उस प्रेम में पाया, उस भगवत भक्ति में पाया, उस सेवा में पाया। ये बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति बाहर से आके भारत में बस जाए और फिर वो ये कहें कि मैं भारत में नहीं बल्कि भारत मुझ में बसता है तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। और मैं साध्वी जी, आपने बताया कि आपका दिन शुरू होता है योग से, ध्यान से, और आप मतलब मैं यहाँ बैठ के मैं वो अनुभव कर पा रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ उस डिवाइन वाइब्रेंट एनर्जी को, जो मतलब हर जगह से मिल रही है, हर जगह से मेरे पास आ रही है। मैं भी योग और ध्यान का एक रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ, पर आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी विधियाँ हैं, क्या वो पहले कुछ जो स्टेप्स होते हैं, हम पहली बार में ध्यान नहीं लगा सकते, हम पहली बार में उस समाधि की बात नहीं कर सकते, तो वो क्या पहले स्टेप्स हैं जो एक व्यक्ति को, क्योंकि बहुत लोग सुन रहे हैं इस बात को, तो आप बताइए। देखिए, पतंजलि जी ने एक्चुअली हमको पूरी रेसिपी दिया। ठीक बात। जब पतंजलि जी ने हमको अष्टांग योग दिया, 8 limbs of yoga, he gave it very clearly. अगर आप समाधि तक पहुंचना चाहेंगे, where do you start? Naturally, कोई बहुत खास कृपा के बिना सबसे पहले बार समाधि तो शायद नहीं लगेगा, लेकिन धीरे 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 जरूर हो जाएगा। But in order for us to really begin that practice, we begin with yam and niyam. देखिए, अगर मेरी त्रिकोणासन सबसे सुंदर त्रिकोणासन, या अगर मैं शीर्षासन आधा घंटे तक कर सकती, लेकिन if I live in violence, in untruth, in stealing, if I am living in adharma, तो फिर जो मैं शरीर से कर रही हूँ वो योग नहीं है, एक्सरसाइज है। ठीक बात। एथलेटिक्स है, कैलिस्थेनिक्स है, एक्रोबैटिक्स है, ठीक बात। but it's not योग। सब कुछ है योग के अलावा। वो तब भी योग है अगर मेरी योग की फाउंडेशन है यम और नियम। If I begin my practice, ahimsa, satya, asteya, I mean, we don't even have to go into all 10 of them. Even agar aap pehle 3 lein, I will live with no violence. Not to myself, not to others, not directly, not indirectly, not by action, not by word. I will Not live mentally. in total truth. I will live in truth. Means not just I won't tell an obvious lie, but it means even little lies I will not tell. I will live in truth. I will live without stealing or hoarding. It doesn't mean ki keval I will not steal your wallet. It means also I will not steal the resources, the land, the water, the time, the health of people on this planet, which so many of us do. Look at our shopping habits. Look at our, habits of how we use things that are being produced in factories that are cutting corners with their waste spewing into the air, into the land, into the water. We're stealing. We're stealing the health of women and children working in sweatshops. We're stealing the health of Mother Earth.
by letting that pollution go in the air, in the ground, in the water, we're stealing the human rights of people who are living in slave labor just because man mange more, mujhe cheaper chahiye. So these factories are cutting corners. That is stealing and hoarding. So, Pele we begin Yamaniya, how we live in the world, live according to Dharma, live according to truth, live according to purity, live according to love. Then asana, it's beautiful, keeps the body healthy and strong. Then pranayama brings us into that body, that energetic body. The exercise of inner body. The exercise of what, our energetic body, it actually moves the energy in the body. It also allows us to start to shift from the outer world to the inner world. True. Third, pratyahar, we withdraw our senses. So literally just as we sit, aankh band karke, just be aware. Consciously withdraw the senses from being focused on the outer world to the inner world. For Dharan, we focus on one thing. Chahe ek mantra ho, chahe ek Bhagwan ki murti ho, ya image ho, ya Bhagwan ka naam ho, chahe ek candle flame ho. Whatever we are focusing on, one thing. For Dhyan, when that concentration becomes full, then suddenly, चाहे मैं मंत्र के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, मेरा श्वास के ऊपर, भगवान का नाम, whatever I am focusing on, suddenly I become one with it. Suddenly that separation between the one who is watching and the object that is being watched, suddenly that line disappears. And I become one. There is no distinction. Third, samadhi. That ultimate union. The lover and the beloved and love, we're all one. That ultimate oneness. So yoga is something we practice all day long. Or don't worry about samadhi. वो अपने आप हो जाएगा. Worry about the first 7 limbs. You've actually got control and power over these first 7 limbs. उस पे ध्यान दो. समाधि अपने आप हो जाएगा. तो जैसे आपने बताया, मेरा भी ये मानना है कि योग जुड़ना होता है. वो इस शरीर का आत्मा से और फिर इस आत्मा का परमात्मा से. यम से वो यात्रा शुरू होकर समाधि तक जाती है. ये वही यात्रा जो को हम से सो हम तक की है. तो ये बहुत आपने अच्छे से समझाया. ये इतना सुनने में इतना सरल और अच्छा लग रहा था कि जैसे बातों से समाधि लग रही हो. ये जैसे हम एक समाधि का होता है अस्मितानुगत समाधि. तो हमारा अपना इंट्रोडक्शन, मेरी पूंछ, मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, ये सब भूल जाने तो एक समाधि है. ये बहुत अच्छी बात बताई. अभी आपने लास्ट में बताया कंट्रोल करना. क्या ऐसी कोई टेक्निक्स हैं, कोई ऐसा बहुत छोटा कोई एक स्टेप हो जिससे, क्योंकि आज एक्चुअली क्या है कि आजकल यूथ जो है वो एंग्जाइटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, इन एंगर की तरफ, ऐसे गुस्से की तरफ, ये चीज़ों की तरफ बढ़ने लग गया है. उनका वो कहते हैं कि नहीं, अगर कोई चीज़ चाहिए तो अभी चाहिए, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अभी इंस्टेंट अभी चाहिए. तो वो कंट्रोल क्यों नहीं है? वो माइंड पर कंट्रोल क्यों नहीं है साथी जी? देखिए, the mind, you can think about it like a muscle. True. It's not made of muscle fibers, but we can think about it like a muscle. Because however you work it, that's what you get. If you say to me, Ki, give me your bicep, and I've never lifted weights, I've never done anything, तो bicep कहाँ से बनेगा?
If I want to show you a bicep, तो पहले मुझे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा. Doing some weightlifting, doing some push-ups, doing something. फिर धीरे 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 मेरे bicep बढ़ेगा. In the same way, if I am living my life in such a way that my entire mindset is based on जो मैं चाहती हूँ, जब मैं चाहती हूँ, जिस तरह से मैं चाहती हूँ, जिससे मैं चाहती हूँ. And if I don't get it, then I throw a temper tantrum. Or I go out and I get drunk. Or I smoke cigarettes. Or I punch a wall. Or I punch a person. तो फिर यही impression बनेगा. That's the muscle I am then creating. That's the impression I'm creating. That's the groove we are creating in our own minds. And if I do it once, I'm much more likely to do it the second time. If I do it twice, I'm much more likely to do it the third time. As we act, so we are creating the actual patterns of our mind. In neurology, we say neurons that fire together, wire together. It means, let's say that every time I get upset, I drink a beer. Those will now get wired together in my brain. And now, every time I get upset, even without thinking I need a beer, suddenly मेरे हाथ में beer आएगा. Unconsciously. Gone to the fridge, got it, मतलब बिना सोच के. Yeah, every time I get angry, I punch a wall. फिर अपने आप होने लगेंगे. And this is why we must be very careful. What habits am I creating? What sanskaras, what impressions am I creating in my mind? And the greatest way to gain power, because who wants to be a slave? We're always talking about swatantrata. But then we are a slave. We're a slave of the patterns of our own mind. We're a slave of the chemical and electrical activity in our brain that we call anger. We say, तो I was angry, तो करना पड़ा. तो किसने कहा करना पड़ा? Just because your brain was secreting chemicals and having an electric reaction that we call anger, it doesn't mean you have to punch a wall. It doesn't mean that you have to have a temper tantrum. It doesn't mean you need to drink a beer. You're not a slave of the chemical and electrical patterns in your brain. So the way to gain control is actually very simple. Awareness. And by the way, this is also the very best treatment for anxiety. So two things simultaneously. Just simply close your eyes and draw your awareness to your breath. Don't try to change the breath. This is not pranayama. Simply become aware. Just notice it. But as you do that, allow that awareness, instead of being focused here, high in the chest, bring the awareness down, low in your abdomen, below your navel. Drop that awareness of your breath as low in your abdomen as you can. And the minute you do that, what you'll find is man shant ho jata. The moment the breath drops low in my abdomen, because when I'm stressed, when I'm angry, it becomes like that, right? We breathe very high up in the chest, very shallow. When I lower the breath deeply, low in the abdomen, it becomes very slow, very deep. और अपने आप मन शांत हो जाता है. Keep that awareness focused on the breath. Your mind will try to wander.
some noise will be there, some sensation will be there, some thought will arise. But just gently bring the mind back. Don't let it run away from you. The moment that you notice that the mind has wandered, just bring it back. Just bring it back. Just bring it back. Don't get angry at yourself. Don't say, oh, now I'm not even a good meditator. I can't even watch my breath. Koi bhi conversation mat karo. Just the moment you notice कि मन उधर चला गया, उसको वापस लेके gently, lovingly. Imagine that you were training a tiny little baby puppy and you're teaching it not to pee on the couch. You're teaching it not to play here, not to go there. Yeah, you're going to kill it every time it goes in the wrong place? Of course not. You're just gently going to guide it back. So in the same way, when the mind wanders, just gently bring it back. Think about it like a puppy or a kitten, or like a little baby, a small child. Child is going somewhere, you say, nee, 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 baby. They keep going, you just gently bring them back. You're not going to yell at them or hit them or kill them. You just lovingly bring it back. And if you can learn to do that, 2 steps. Drop into the breath, low in the abdomen, and then simply draw the awareness to your breath. Just allow that awareness to fully merge into the breath. Wherever the mind goes, just bring it back. Just bring it back. Just bring it back. And slowly, slowly, slowly you will get not only calm and peaceful in the moment, but you will gain control over the mind. You will learn कि हाँ मन कभी कभी उधर तो चले जाते हैं, पर इसका मतलब नहीं कि मुझे भी जाना है उसके साथ. मैं मन को वापस ले आऊँगी. Whether my mind goes in anger or in greed or in jealousy, wherever it goes, I can just bring it back. So those are 2 very, very simple practices that anybody can do starting right now. Very, very beautiful, and thank you for giving such a beautiful session. और ये सब बातें, ये सब चीज़ें, मैं अंदर से तो क्या बताऊँ, बाहर एक मुस्कान के अलावा कुछ नहीं है, स्माइल के अलावा कुछ नहीं है. और बहुत सुंदर साध्वी जी. तो साध्वी जी, आपने काइट देखा होगा, आपने पतंग यहाँ देखी होगी, बहुत लोग उड़ाते हैं. पतंग बहुत ऊपर जा सकती है, बहुत पार जा सकती है, परंतु उसको एक थ्रेड, एक धागा रोक कर रखता है, बांध के रखता है. उसको एक सीमित एक दायरा देता है कि आप इसके आगे नहीं जा सकते. हम बहुत सारे लोग हैं जो उस पीस को पाना चाहते हैं, उस शांति को अनुभव करना चाहते हैं जो आज आपके पास है, जो संतों के पास है, महात्माओं के पास है. परंतु हर व्यक्ति के मन में वो कोई ना कोई एक धागा है. वो चाहे किसी से ईर्ष्या का हो, कुछ परेशानियों का हो, स्ट्रगल्स का हो, ऐसे हर्डल्स का हो, वो कोई ना कोई धागा, वो थ्रेड हर एक की लाइफ में है. और मैंने आपकी बुक पढ़ी तो मुझे पता चला कि आपके भी जीवन में एक धागा था, वो थ्रेड था. मैं चाहता हूँ कि वो थ्रेड आप अपने आप से बताएं और आप उससे कैसे निकले. तो जब मैंने Hollywood to the Himalayas जब मैंने लिखा, तो अब तो मैं 26 साल से यहाँ पे हूँ. 1 साल ज़्यादा है और यूएसए. और जब मैंने लिखा तो लोगों ने मेरे से पूछा कि how you were so open and so honest about what you experienced, about your life, about all of your experiences, the struggles, the challenges, the trauma.
And the reason that I wrote it all is because I wanted everyone to know that grace doesn't discriminate. It doesn't matter what you've been through. In my life, I, on the one hand, had everything. All the privilege, all the opportunity, all of the very best of everything. And in my young childhood, I also had suffered very severe abuse and then abandonment. And when you suffer things like that in your childhood, as you know, later on, uski ramifications hote. And in those ramifications, I ended up developing a very severe eating disorder. I was struggling with depression. That was really this thread, that held me back. I felt like I'm a victim. I'm a victim of abuse. I'm a victim of abandonment. I have this problem of this eating disorder. I have this depression. And I always thought I will never really be able to soar. I will not be able to reach any kind of those heights. Yes, I was getting straight A's at Stanford University. I was getting a PhD. From the outside world, I was succeeding beautifully. But in the inner world, that height of peace, of joy, of divine connection, मैंने सोचा कि मेरे लिए कभी possible नहीं होगा. But जब मैं भारत में आई और माँ गंगा के पावन तट पे उनकी दर्शन किया और ये अनुभव हुआ, this अनुभव of the divine. And then when I met my guru, Pujya Swami Chidanand Saraswati Ji, और Pujya Swami जी ने मुझे कहा कि तुम जाके गंगा जी को दे दो सब. All of your anger, all of your pain, all of your grudges, बस सब कुछ गंगा जी को दे दो. Let her take it. You will be free. Pujya Swami जी ने मुझे कहा कि you are not the body, तुम शरीर नहीं हो. You are not a victim of anything. वो बच्ची जिसको ये सारी चीज हो गया, that's not you. Show me the arm, show me the leg, show me the skin of the person to whom that happened. वो है नहीं यहाँ. How many times your body has changed since that? That's not your body anymore. And in any case, you're not the body anyway to begin with. So he gave me these very powerful teachings of realizing I wasn't a victim. I wasn't this person who was stuck and small and suffering and challenges, that actually I could give that anger and give that pain to Ma Ganga. And so I did. And मैंने कह रही हूँ कि it's easy. It's not easy. It's not easy by any means. इसलिए मैंने पूरा पुस्तक लिखा. It's not just one line. One line हो, give it to Ganga, तो फिर पूरी पुस्तक लिखना कोई आवश्यक नहीं होता. But I wrote it ताकि people could really understand what it's like to let go, what it's like to forgive, how to do it, how to shift their mindset, their way of thinking, from what I call the Hollywood way of thinking. Hollywood में कहते हैं, you are your body. You are the size, the shape, the color, the bank account, the role. And you are what has happened to it. Where you've been cheated, where you've been betrayed, where you've been abused. You are all of that. And you are your struggles. You are your emotions. वो Hollywood की परिभाषा है. हम कहते हैं. Himalayan way of thinking says you have a body, but you're not the body. You are the soul. Ab Atma. You are the soul. You are the spirit. You are consciousness. You are love. You are truth. And so let go of all of that bondage that's keeping you stuck. And so in the book I share with people
how actually to let go. And of course also it's not only filled with the struggle and the letting go, it's filled with 25 years of ecstasy, of divine spiritual experiences, of being here on the banks of Ganga, of being in the Kumbh Mela, of being in Gomukh, being in Mansarovar, being on Yatra, all of the really sacred experiences. But in order to experience them, वो पहले मन को शांत करना है. And that was the first beautiful blessing that I got. जब आप गंगा किनारे आए, आपने माँ गंगा को अपने मन, तन, इच्छाओं, थॉट्स सब कुछ माँ को समर्पित कर दिया. और ऐसा नहीं है कि वन वे था, आपने समर्पित किया और माँ ने अपना लिया, माँ ने गंगा पुत्री बना लिया. और ये मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ ही अच्छी है तो वो यहाँ पहुँच रहे हैं. नहीं का कोई आवश्यकता नहीं है पहुँचने का. ये जो हॉलीवुड टू द हिमालयस की टाइटल जो है, वो मेरी लाइफ का जो आर्क है, जो पैथ, जो यात्रा, वो फिजिकली मैं हॉलीवुड से हिमालय तक पहुंच गई फिजिकली. बट ऐसे नहीं है कि सबको उसी यात्रा पे जाना है. नो, वो जो दूसरी यात्रा is the yatra of the mind, the mindset yatra, from that Hollywood way of thinking to the Himalayan way of thinking. और वो सब कुछ कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि संन्यास जीवन जीना है, गृहस्थ जीवन, ये तो सब मन का खेल. It's the mind that keeps us stuck. तो whatever life people are living, जहाँ भी हो, whatever job they're in, whatever relationship they're in, ये जो मन की freedom, that shanti, that peace, वो तो सबके लिए available है. और वो मन की हॉलीवुड से हिमालयस की यात्रा, वो इसलिए मैंने पुस्तक लिखा ताकि everybody could understand how to take that journey in their own life. ताकि अगर सचमुच गोमुख तक पहुंचते हैं या मानसरोवर तक पहुंचते हैं in their bodies, wonderful. नहीं पहुंचते हैं, don't worry. मैं आपके लिए पहुंच गई. फिर मैं वो एक्सपीरियंस वापस लेके सब उसमें शेयर किया कि कैसे लगता है कैलाश की परिक्रमा करके, गोमुख के पास पैदल जाके यात्रा में. All of these beautiful experiences, I brought them back to share with people. तो ये ऐसा है कि किसी व्यक्ति ने, हम लोग अपने जीवन में एक यात्रा करते हैं. बहुत सारे लोग एक सीमित यात्रा करते हैं, घर से काम, काम से घर, इसके अलावा कोई जीवन नहीं है. तो उन लोगों के लिए भी, और या जो लोग नए एक्सपीरियंसेस देखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप लगाइए हॉलीवुड से हिमालय तक की पूरी यात्रा का एक वर्णन इस पुस्तक में है. और मैंने पिछली बार भी कहा था कि वो हॉलीवुड थे, ये हॉलीवुड्स हैं. हॉलीवुड्स हैं. तो ये एक पवित्र जगह और हॉलीवुड, इन सब का जो समन्वय है वो साध्वी जी ने इसमें लिखा है. तो मैं आज ये सत्र चर्चा साध्वी जी के साथ यहाँ विश्राम लेती है. और सभी का धन्यवाद, और साध्वी जी आपका बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा. It was beautiful. So nice to be together.